Ladies and gentlemen, welcome to the weekly review and roundup of the economic news and development in our country and what it means for your savings and investments. Make the smart move today and invest with Caesar Capital. Acha ji, the much touted UN hosted donors conference took place this week, titled International Conference on Climate Resilient Pakistan. अच्छा, इसके दो objectives थे. Number one was laying out Pakistan's post-flood climate resilient rehabilitation and reconstruction strategy कि हम अपने फ्लड्स को कैसे कवर करें, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन जो अफेक्टेड एरियाज़ है उनको कैसे हम लेके चलें. एंड सेकेंडली to seek long-term international support and partnerships to share the government's financial burden. Achha, but unfortunately, Pakistan's thinly veiled attempt to use the post-flood opportunity to bail itself out of the dollar crisis was quite evident to the donor community. Even the finance minister tried to put on a humanitarian angle to the crisis and portray an urgency for the dollar inflow rather than कि एक long term commitment लेते donors से एक climate resilient nation build करने की. उधर foreign से पहले prime minister और foreign minister both ended up showing desperation for dollars and tried to convince the donors for urgent and immediate release of aid. Interestingly, there's been some talk in town के जो $10 billion के pledges लेके आई है government donor conference में, that might help with IMF being a bit lenient on the government कि कुछ relaxations दे दें, कुछ concessions दे दें tough measures लेने पे. But don't be naive, that won't happen. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. और IMF will demand whatever it has demanded before. PMLN and the PDM government is in a tight spot. अगर उन्होंने इकोनॉमिक हालात बदलने हैं, इकोनॉमिक सफरिंग कम करनी है, तो उनको पावर में रह के टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे IMF को ऑन बोर्ड लाने के लिए. और IMF ऑन बोर्ड आएगी तो आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी. अच्छा, और अगर PMLN गवर्नमेंट छोड़ती है एंड द PDM गवर्नमेंट फॉल्स डाउन, तो शहबाज शरीफ वुड look like an incompetent prime minister and look like a quitter जो कि ये बिल्कुल फील नहीं देना चाहेंगे पब्लिक को. तो लिहाजा अब PMLN is in a quote unquote lose सिचुएशन. पब्लिक को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं तो first and foremost they would have to take tough decisions जो कि IMF backed हैं. अगर वो नहीं लेते तो देन अगेन आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे और उससे मज़ीद पेन आएगी पब्लिक के लिए. डॉलर वुड बी लेट लूज. और अगर वो इस टाइम पे इंटायरली गवर्नमेंट छोड़ने की बात करते हैं, शहबाज शरीफ वुड लुक एज इनकॉम्पिटेंट और वुड लुक एज के मुसीबत पड़ी तो क्विट करके निकल गए. लिहाजा द फ्यूचर इज़ ब्लीक फॉर PMLN. इसका क्या इम्पैक्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड अगले इलेक्शंस में आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे, मुख्तलिफ बिजनेस सेक्टर्स पे. हाउ आर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शुड बी prepared current political scenario given this current economic mess. Stick with the expert guidance of Caesar Capital so that your personal economy stays in good hands. अच्छा जी, आगे चलते हैं for some discussion on the cement and the automobile sector. The cement sector has been the victim of rising construction costs post-COVID. एक commodity super cycle आया and coal shot up. Similarly,
स्टील का जो रॉ मटेरियल है, आयरन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज़ गॉन अप कंसिडरेबली ओवर द लास्ट अगर एक एवरेज एस्टिमेट लें 70% बढ़ गई है पिछले 1.5 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. Cement sector has been badly affected with these rising construction costs. Consequently of the fiscal year, जून टू दिसंबर के दरमियान 20% ईयर ऑन ईयर सीमेंट के डिस्पैचेस गिर गए हैं और दिसंबर में एक्सपोर्ट्स हैव इवन गॉन डाउन टू 5% ऑफ टोटल सेल्स. 5% बाहर जा रहा है, 95% डोमेस्टिकली बिक रहा है सीमेंट आपका. गोइंग फॉरवर्ड डोमेस्टिक सेल्स और डोमेस्टिक ऑफटेक उसके बगैर आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में एक प्राइस कंपटीशन देखने में नज़र आ सकता है. सीमेंट कंपनी कैन स्टार्ट लूजिंग ऑन देयर अर्निंग्स. ओवरऑल द डिमांड सिचुएशन फॉर सीमेंट डज नॉट सीम वेरी गुड. इस सारी सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे और गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. स्टिक विद द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ सीजर कैपिटल एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर सेविंग्स. अच्छा जी, ऑटो सेक्टर में पाकिस्तान सुजुकी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट वुड कीप इट्स कार असेंबली प्लांट्स शट फॉर अनदर वीक ऑफ जनवरी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेड किट्स जो असेंबली के लिए ये लोग इंपोर्ट करते हैं और क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी, एग्जिस्टिंग जो स्टॉक था वो डिप्लीट हो चुका है. द इंटायर इंडस्ट्री इज़ फेस्ड विद सप्लाई चेन डिसरप्शन. सुजुकी से पहले मिलेट ट्रैक्टर्स ने अपना प्लांट, अपनी प्रोडक्शन सस्पेंड करने की अनाउंसमेंट की. टोयोटा ऑब्जर्व नॉन प्रोडक्शन डेज इन अगस्त 2022, सितंबर 2022 और अभी दिसंबर 2022. टोटल ऑटो सेल्स इन दीज 5 months, जून टू नवंबर, टोटल वॉल्यूम को अगर हम देखें 40% कम गाड़ियां बिकी. असेंबलर्स ने अभी तक अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ नहीं किया, लेकिन इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी ले ऑफ करना शुरू कर दें जैसे जैसे सिचुएशन डॉलर्स की ख़राब होती जाएगी. ऑटो industry is, like many other industries, facing a severe crisis due to the dollar shortage. The crux of this analysis points out to the urgent need of going to IMF so that what investment opportunities there still might be there, you know where to go. Caesar Capital for your expert guidance and to make the most out of your savings.